Good evening, all of you. Audible? Check sound. Yes, sir. Okay. I'll be share the screen. Before that, uh, in the previous lectures, what you have to see and what you have to talk about there. To understanding the fundamental of internet uh, and principle of web designing will be discussed for there. In this first structure, we have to understanding the structure of HTML, how to write it, what are the various pages you have to create it for there, like a formatting text using a tags. Collection of tag you have to use in a HTML. HTML basically is a markup language, right? Also, we have to see the various type of list, order list, bulleted list, definition list, nested list are there. Definition list is there also. Also, some special character how to insert in a web page. Will be also understanding for there. Creating the hyperlinks and anchors. What we have to create links for your pages. So basically in the web page, there are a lot of linkings are there. So link will be set with the help of hyperlink tag. Anchor tag is it is here. So anchor tag you have to use for there. Anchor it nothing but the hyperlinks. Means linking your pages. So also in a single page, if you want, there is a large. So you can be a navigate for the cell. So you have to put up for this section like and hash section 2. They will be directly jump to the section 2. Right. So that are the practical things you have to do here. Practically you have to understanding better also. Hyperlink of email. Directly you have to link for the email address. Just you have to put up the href is equal to mail to example@example.com. So मेल में पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा. Hyperlinks you have to set for there. Hyperlinking to other contents. External website, if you want to connect, if you want to link, so you have to use welcome visit ahref. This is an external page you have to connect http://wikipedia.org. www.wikipedia is a website. Target is equal to underscore blank. So it will be the click on that Wikipedia will be open in the blank page. So it's a really very, Screen is very not visible. always wait. Okay. Yeah, thank you. So then hyperlink to download files. Just click and download फाइल. जैसे कि पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है तो पीडीएफ का नाम देना है. डाउनलोड इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स यू हैव टू राइट फॉर देयर. तो वो डाउनलोड हो जाता है. स्पेसिफिक सेक्शन वाइज आपको लिंकिंग देना है. यू हैव टू सेट द वेरियस लिंकिंग विद द हेल्प ऑफ सेक्शंस. तो ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. ऑन ऑल आर दीज आर द प्रैक्टिकली यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग बेटर. तो सब एग्जांपल ये करके देखना है. सिंपली इट इज एचटीएमएल पेज यू हैव टू create it for there. सेव विद द हेल्प ऑफ .html. नोटपैड में टाइप करके इसको आपको खाली ब्राउजर के अंदर शो करना है, वर्कआउट करना है. ओके. सो टुडे स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, स्टाइल शीट्स एंड ग्राफिक्स. सो बेसिकली फॉर्मेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट. आप कोई भी वेबसाइट डिजाइन करते तो फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, राइट. डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट रहता है,
formatting is also important for there. You have to format in a various way. In the previous chapter we have to see simple formatting हमने देखा, bold, italic, underline, underlining, headings, paragraphs. You have to set for there. But here we have to also see the one of the style sheets for here. What exactly that? Style sheets are a crucial part of a web development, allowing you to control the presentation and layout of your HTML contents. मतलब आपको कुछ प्रेजेंटेशन करना है, लेआउट्स वगैरह बनाना है, कंटेंट्स जो आपको प्रेजेंट करने पड़ते हैं, तो उस पर्पस के लिए भी आप ये स्टाइल शीट यूज कर सकते हैं. The most commonly used style sheet language is CSS, that is cascading style sheet बोलते हैं इसको. Here's an overview of style sheet in HTML5, including how to use them and their benefits. तो इसको यूज कैसे किया जाता है, इसके बेनिफिट क्या है? So let's see here one by one, discuss here. So basically CSS, what exactly the CSS? CSS stands for Cascading Style Sheets. Is a style sheet language used to describe the look and formatting of a document written in HTML or XML. मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करना है, उसका लुक वगैरह आपको चेंज करना है, स्टाइलिश बनाना है, तो आपको ये CSS हेल्प करता है. So they will be written in HTML or XML also. CSS enable you to separate the content from design, making it easier to maintain and update your web pages. अब ये क्यों किया जाता है, ये CSS का यूज ज्यादा से ज्यादा? क्योंकि इससे डिजाइनिंग जो रहता है आप इजीली कर सकते हैं, मेंटेन इजी कर सकते हैं और अपडेट भी आप इजीली कर सकते हैं. तो इसके बेनिफिट क्या क्या है फिर? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ CSS? तो ये स्टाइल शीट का यूज करके क्या बेनिफिट है? फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स. CSS separate the structure of web page HTML from its visual presentation, allowing for easier maintenance and better organizations. तो इसमें इसका स्पेशल एक स्ट्रक्चर बन जाता है. सेपरेट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज. वेब पेज का एक स्ट्रक्चर आप एक सेपरेट CSS में डाल सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं. फ्रॉम इट्स विजुअल प्रेजेंटेशन, allowing for easier maintenance and better organization. Consistency. इससे consistency होता है. By applying the same style sheets to multiple pages, you ensure a consistent look and feel across your websites. तो consistency भी आता है इसमें. मल्टीपल स्टाइल शीट आप अप्लाई कर सकते हैं. सेम स्टाइल शीट टू मल्टीपल पेजेस यू हैव टू अप्लाई फॉर देयर. एक ही स्टाइल शीट आप मल्टीपल पेजेस को अप्लाई कर सकते हैं. यू इंश्योर अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील अक्रॉस योर वेबसाइट. तो इससे क्या होता है कि आपका वेबसाइट का एक स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन होता है, लुक एंड फील एक यूनिक बन जाता है. तो it is also one of the advantage benefit of their consistency is there. Flexibility is also there. Another third benefit is their flexibility. CSS allows for responsive design that adapt to different screen size and devices. It's one of the best benefit of that CSS. मतलब आप जो भी डिजाइन करोगे तो डिजाइन कैसा है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन. मतलब it will be the various screen size or devices they will be adopted.
they will be visualized for that CSS. Another is a fourth a benefit improved load times. A single CSS file can be cached by browser, reducing the load time for subsequent visits. तो इसमें लोडिंग जो टाइमिंग होता है वो क्या हो जाता है रिड्यूस हो जाता है. So these are the four benefit of CSS cascading style sheet. First is a separation of concerns, consistency, flexibility, and improve the load times. इससे टाइम जो है आपका enhance होता है, reduce the loading times will be there for subsequent visit because of CSS file can be catched by browser. So let's see the next point here, understanding styles, constructing style rules. तो उसके बेसिकली हमें कुछ रूल्स पता होना चाहिए. बेसिकली हमें उसको अंडरस्टैंडिंग करना है कि क्या एग्जैक्टली होता है सीएसएस. So understanding styles, constructing style rules. Style in HTML5 are primarily applied using CSS, cascading style sheets. Style define how HTML elements are displayed on a web page. मतलब HTML में आप जो भी एलिमेंट यूज करते हैं तो एलिमेंट किस तरह से डिस्प्ले हो पाएंगे तो उसके रिलेटेड स्टाइल्स आप डिफाइन करते हैं. स्टाइल शीट allowing for control over layout, colors, fonts, spacing and much more. तो उसमें आप लेआउट्स के बारे में, कलर के बारे में, फॉन्ट के बारे में और इससे भी और बहुत कुछ आप इसके अंदर स्टाइल में डिफाइन करते हैं. Understanding how styles work and how to construct style rules is a fundamental for effective web design. तो अगर आपको कोई भी सीट बनाना है तो उसके पहले रूल हमें पता होना चाहिए. तो बेसिकली स्टाइल से क्या होता है कि आपको एक स्टाइल शीट बनाना है. उसमें आप जो HTML के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे वो एलिमेंट्स वहां पे स्टाइल शीट में सेट करके आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग वहां पे सेट करके वो वेब पेज को आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हैं. So that is the things you have to do in the CSS. So that will be see the practically how it can be done. Okay. CSS syntax rules are made up of selectors and declaration of blocks. There's a basic syntax. तो सबसे पहले आता है selectors. Selector is nothing but the element name. मतलब हेडिंग हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. उसके बाद ब्लॉक के अंदर आपको प्रॉपर्टी और वैल्यू ही सेट करना है. प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन. Let's see the explanation of this. Selector means what? This specifies which HTML elements. HTML एलिमेंट मतलब क्या? आप जो भी टैग देख रहे हो वो सारे एलिमेंट्स है. हेडिंग टैग है, पैराग्राफ टैग है, एंकर टैग हो सकता है, कौन सा भी टैग, वो सब एलिमेंट्स ही. द स्टाइल्स रूल अप्लाई टू द एग्जाम्पल H1 क्लास नेम हैश आईडी आप ये डिफाइन कर सकते हो. डिक्लेरेशन ब्लॉक्स इनक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस जो ओपनिंग ब्रेस और कर्ली ब्रेस रहता है इसके अंदर आप क्या कर सकते हो वन और मोर डिक्लेरेशंस. इसके अंदर आप एक से ज्यादा डिक्लेरेशन सेट कर सकते हैं. मतलब प्रॉपर्टी
और वैल्यू सेट कर सकते हो विद प्रॉपर्टी. The CSS property you want to style, for example, color, comma, font size, these are the property. Value, the value you want to assign to the property. जो property को value assign किया जाता है, जैसे कि color red, font size 16 px. So let's see the example below. How to write a styles rule. Example of style rule. H1. H1 क्या है? It is a selectors. ओपनिंग ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा है? सारे के सारे प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखे है. इज इट राइट? कौन से प्रॉपर्टी लिखे, वैल्यू लिखे? कलर कोलन ब्लू सेमीकोलन, फॉन्ट साइज कोलन 24 px, set the font size to 24 pixels, set text color to blue, text dash align colon center, center the text. So that is the rules wise you have to set for here. तब ये जो सिलेक्टर से H1 में जो भी आपने लिखा होगा उसका कलर ब्लू हो जाएगा, उसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल हो जाएगा और उसके जो कंटेंट है वो सेंटर हो जाएंगे. Is it understand? Got it? Types of selectors. तो अलग अलग टाइप्स होते हैं सिलेक्टर्स के. एलिमेंट सेलेक्टर्स, टारगेट HTML एलिमेंट बाय देयर नेम, जैसे कि अभी P इज अ सिलेक्टर, कलर कोलन ग्रीन, स्टाइल ऑल पैराग्राफ एलिमेंट्स, मतलब जो पैराग्राफ आपने दिया होगा HTML में उसका जो भी कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. तो पहला सिलेक्टर है एलिमेंट. सिलेक्टर आप सेकंड यूज कर सकते हो क्लास. टारगेट एलिमेंट विद स्पेसिफाइज स्पेसिफिक क्लास, क्लास नेम स्टार्ट विथ डॉट. तो आप एलिमेंट सिलेक्टर भी यूज कर सकते हो, क्लास सिलेक्टर भी यूज कर सकते हो. एलिमेंट सिलेक्टर के लिए आपको एलिमेंट के नाम पता होना चाहिए, कहाँ पे किसका कौन सा फॉरवर्डिंग देना है. क्लास सिलेक्टर के लिए डॉट का यूज करके आपको जो नाम देना है वो दे सकते हो. ओके, लेट्स सी द हियर. डॉट हाईलाइट, डॉट है मतलब क्लास है, हाईलाइट इज द नेम ऑफ दैट क्लास. अब इस पे क्या किया है? बैकग्राउंड डैश कलर, ऐसा ही देना पड़ेगा आपको. डैश जहाँ पे डैश होगा वो डैश ही देना पड़ेगा, जो वर्ड दिए वही यूज करने पड़ेंगे आपको. कोलन एलो सेमीकोलन. स्टाइल्स एलिमेंट्स विद अ क्लास हाइलाइट्स, जो स्टाइल की एलिमेंट्स रह गई वो विद क्लास हाइलाइट्स, हाइलाइट्स हो जाएगी कलर एलो से. तो पहला टाइप्स था सिलेक्टर का एलिमेंट, दूसरा टाइप्स था एलिमेंट का सिलेक्टर का क्लास, तीसरा टाइप्स क्या है? आईडी सिलेक्टर. टारगेट्स an element with a specific ID. ID starts with hash. तो यहाँ पे हैश हेडर से हैश से स्टार्ट होता है. डॉट मतलब क्लास, आईडी सिलेक्टर के लिए हैश रहता है. हैश हेडर बैकग्राउंड कलर ग्रे, स्टाइल द एलिमेंट विथ आईडी हेडर. उसके बाद नेक्स्ट से फोर्थ यूनिवर्सल सिलेक्टर.
Target all elements in the documents. यूनिवर्सल सिलेक्टर भी होता है। इसमें क्या होता है, टारगेट ऑल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट, जो भी एलिमेंट के सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे उसको टारगेट किया जाता है। मार्जिन कोलन 0 resets margin for all elements. Padding colon 0 reset padding for all elements. तो ये तीसरा टाइप था यूनिवर्सल सिलेक्टर। फिफ्थ टाइप पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। टारगेट एलिमेंट्स based on the presence of specific attribute. A target equal to underscore blank colon color colon red semicolon. Style anchor tag element that's open in a new tab और उसका कलर रहेगा रेड। तो देयर आर 5 सिलेक्टर वी हैव टू सी हियर। पहला हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर, दूसरा देखा हमने क्लास सिलेक्टर डॉट से प्रेजेंट किया जाता है, तीसरा देखा हमने आईडी सिलेक्टर हैश, उसके बाद फोर्थ देखा हमने यूनिवर्सल और फिफ्थ है एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। तो इसमें एट्रीब्यूट सिलेक्ट किया गया है इसलिए उसको एट्रीब्यूट सिलेक्टर बोलते हैं। जैसे कि टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, तो ये टारगेट जो है वो एट्रीब्यूट से है, इसलिए उसको एट्रीब्यूट सिलेक्टर बोलते हैं। So in the CSS there are different types of selectors we have to use. 5 selector you have to use. Constructing the style sheet, अब ये स्टाइल शीट को कंस्ट्रक्ट करना है। To construct effective style rules, follow these steps. Identify the HTML elements. Determine which elements you want to style. Choose appropriate selectors. तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है HTML elements. Then choose the appropriate selector. फिर उसके बाद कौन सा selector यूज करना है. Decides whether to use elements, class, ID or other selector based on your needs. Define products, properties and values. Specify what aspects of the elements you want to style and assign appropriate values. Example of complete HTML with CSS. HTML line is equal to en head meta char set meta name is equal to viewport content equal to width equal to device dash width initials dash scale 1.0। यहाँ से आपका ये पेज चालू हो रहा है, ये CSS style body opening bracket font family Arial comma sans serif sets the font for the body। जो बॉडी टैग है उसके अंदर जो आपने लिखा होगा उसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, एरियल sans serif। बैकग्राउंड डैश कलर कोलन हैश F4 लाइट ग्रे बैकग्राउंड मार्जिन 20 px मार्जिन 20 px। तो बॉडी में हमने क्या क्या सेट किया यहाँ पे, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन। उसके बाद H1 इज अ सिलेक्टर, दिस इज एलिमेंट सिलेक्टर।
Body is also element selector. Color colon navy sets the heading colors. Text dash align colon center. तो ये हुए दोनों सिलेक्टर्स. डॉट मतलब क्लास बना के डॉट हाइलाइट्स. बैकग्राउंड डैश कलर येलो हाईलाइट टेक्स्ट. हैश footer id text align colon center. font size 12 px. style close head close body. देन यहाँ से आपका बॉडी चलो. तो जहाँ पे बॉडी लिखा होगा उसका ऊपर जो सेट किया होगा स्टाइल वो यहाँ पे सेट हो जाएगा. जैसे कि अभी वेलकम टू माय वेब पेज उसका फॉन्ट साइज उसका कलर सब चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे H1 यूज किया है ना. H1 में क्या आएगा? कलर नेवी आएगा और अलाइन सेंटर आ जाएगा. उसके बाद पैराग्राफ क्लास जो है हाईलाइट यहाँ पे कॉल किया गया है. टैग पे उसको कॉल करना है. दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड. हियर्स सम रेगुलर टेक्स्ट. डिवीजन आईडी इक्वल टू फुटर एट सी कॉपीराइट माय वेबसाइट. HTML क्लोज बॉडी क्लोज दैट्स ऑल. तो अभी सपोज ये एक एग्जांपल है. अभी इसको हम ट्राई आउट करते हैं. सेटिंग चेंज करना पड़ेगा. हम्म, ये पेज रन करके देखते हो. वेट. विंडो. सपोज एक नोटपैड ओपन किया मैंने. दिखाई दे रहा है आपको नोटपैड? No, sir. नो. ठीक. एंटायर स्क्रीन. ठीक है. अभी एक नोटपैड यहाँ पे मैंने ओपन किया है. न्यू टैब. ओके. अभी ये कोड है. आ गया कोड. पूरा HTML टाइप करेंगे तो टाइम जाएगा. इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर दिया है इसको. अभी मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे. टेस्ट CSS डॉट HTML देना है और ऑल फाइल से सेव करना. एंड से अभी इसको ब्राउजर में ओपन करना आपको. आ गया पेज आपका. टेस्ट CSS ओपन हो गई. गूगल प्रो. देखो ये इफेक्ट आया. अभी जो आपने स्टेबल बनाया ना. So this formatting will be do with the help of CSS. अभी ये वेलकम टू माय पेज वेब पेज. इसका इफेक्ट क्यों आया ऐसा? क्यों सेंटर में आया? क्योंकि हमने H1 को कलर क्या दिया है? नेवी दिया है. इसलिए यहाँ पे भी नेवी आया उसको. सपोज इसको मैं कलर चेंज करता हूँ. नेवी की जगह मैं अभी दूसरा डालता हूँ. रेड डालता हूँ.
सेव किया वापस, सी इफेक्ट हो गया। वेलकम टू माय वेब पेज। डू यू अंडरस्टैंड? तो देखो मैंने क्या किया, खाली H1 में कलर जो प्रॉपर्टीज आ, उसको मैंने क्या किया, रेड किया। पहला नेवी था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर था, इसलिए सेंटर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे, दिस पैराग्राफ इज हाईलाइटेड। हाईलाइटेड का एक क्लास बनाया था, और वो क्लास जो है यहाँ पे दिख रही है, क्लास हाईलाइटेड क्लास। बैकग्राउंड कलर येलो, तो कलर क्या हो गया, येलो हो गया। यहाँ पे भी आप कलर को चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर पाते हो। तो इस तरह से आप ये स्टाइल शीट बना सकते हो। और फॉर्मेटिंग जो है आप जैसे चाहिए वैसा स्टाइल में बना सकते हो। एक्चुअली देखा जाए कि पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे क्लास को कॉल किया गया है। यहाँ पे खाली H1 लिखा है, लेकिन इसका फॉर्मेटिंग इस CSS में लिखा है H1 में। ये H1 का फॉर्मेटिंग है, ये हाईलाइटेड का फॉर्मेटिंग है, ये बॉडी का फॉर्मेटिंग है। अंडरस्टैंड? ओके, वेडू। यू हैव टू डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आप करोगे स्क्रिप्टिंग के, तब आपको और समझ में आएगा, प्रैक्टिकली अदरवाइज नहीं आएगा। एक मैंने आपको सैंपल बताया कि कैसे करना है आप, ठीक है? इसी तरह आपको सारे स्क्रिप्टिंग करने हैं CSS का यूज करके। गॉट इट? दिस अंडरस्टैंड और नॉट एवरीवन? प्लीज रिप्लाई योर मस्ट, योर रिप्लाई इज मस्ट। ओके, Yes, ठीक है। sir. ऑल ऑफ यू से यस नो व्हाट आर इट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज व्हाट, क्रिएटिंग स्टाइल्स फॉर नेस्टेड टैग। तो ये हमने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा कि किस तरह से आप CSS बना सकते हैं यूजिंग element selector, using class selector, using ID selectors। यूनिवर्सल भी है, और 5 टाइप्स में से आप जो चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग द स्टाइल्स फॉर टेस्टेड टैग। When working with HTML5 and CSS, you often encounter nested element, HTML element that are contained within other element। नेस्टेड मतलब क्या, एलिमेंट के अंदर एलिमेंट्स आप यूज करते हैं। अप्लाइंग द स्टाइल्स to this tested tag allows for more specific and organized design. Understanding your nesting in HTML. Nesting occurs when an HTML element is placed inside the another element. For example, division class container, H2 title, close title, H2 close. Paragraph. This is a paragraph within a division P. UL, list item, unordered list. UL close, division close. Applying the styles to nested tag, we can use the CSS to target the nested element based on their parent element. This allows to create more granular styles that apply only to certain elements within a specific contains specific context. Example of styling nested tag. Styles डॉट कंटेनर ये क्लास है। बॉर्डर सेट किया है, पैडिंग सेट किया है, बैकग्राउंड कलर सेट किया है। ओके,
अगेन डॉट कंटेनर h2 इसका भी क्लास बना है कलर कोलन नेवी color for the h2 inside the container margin button 10 px space below the heading dollar container p paragraph font size colors dot container eval dot container li color colon dark green text color for this item style close head close body division class container h2 title h2 paragraph. This is a paragraph within a division p ul list item L1 Li Ul division body plus stable close. Container styles applied to the outer division giving to the border, padding and background color. Nested heading styles container H2 target to H2 element that is inside the container, setting its color and bottom margins. Nested paragraph styles. Dot container P styles for the paragraph element with the container specifying the size and color. Nested list styles. Container li style for the list item, changing their color and adding margin for spacing. तो ये सब कुछ जो ऊपर दिया है उसके बारे में डिस्कशन किया गया एक्सप्लेनेशन दिया है तो खाली आपको वर्कआउट करना है ब्राउजर पे चेक करना है अप्लाइंग द स्टाइल्स टू हाइपरलिंक तो हाइपरलिंक में भी आप क्या कर सकते हैं सीएसएस सेट कर सकते हो हाइपरलिंक आर द इसेंशियल फॉर वेब नेविगेशन आप वेब नेविगेशन करते हो मतलब अलग अलग लिंक सेट करते हो एंड स्टाइलिंग देम इफेक्टिवली enhances user experiences and visuals apple in HTML5 you can apply various css style to hyperlink मतलब आप सीएस जो हाइपरलिंक सेट करते हैं एंकर टैग तो उसमें भी हम सीएसएस सेट कर सकते हो using anchor tag here show the to do it basic applying the style to the hyperlink okay hyperlink is created using the anchor tag a href वेबसाइट का नाम विजिट एग्जाम्पल स्लैशिंग विद css अब ये हाइपरलिंक को हमें स्टाइलिंग करना है स्टाइलिंग हाइपरलिंक विद css basic link style you can be set the style for the default state of hyperlink a anchor color colon blue text dash decoration colon none remove underlining मोस्टली हाइपरलिंक में अंडरलाइन आता है तो अंडरलाइन आप रिमूव भी कर सकते हैं स्टाइल सेट करके ओवर स्टेट चेंज द स्टाइल व्हेन यूजर ओवर्स ओवर द लिंक जब आप माउस लिंक के ऊपर जाते हो लेके जाते हो तब क्या होना चाहिए ए कोलन और कलर डॉट कोलन ऑरेंज ऑरेंज होना चाहिए और टेक्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होना चाहिए विजिटेड लिंक जब आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो विजिट करते हो चेंज द स्टाइल ऑफ लिंक दैट हैव बीन विजिटेड बाय द यूजर्स ए कोलन विजिटेड कलर पर्पल एक्टिव लिंक स्टाइल लिंक व्हेन दे आर क्लिक और एक्टिव जब आप क्लिक करते हो एक्टिव करते हो तब उसका कलर रेड होना चाहिए तो इस तरह के आप अलग अलग विजिटेड लिंक एक्टिव लिंक और लिंक एंड बेसिक लिंक्स तो ये सारे लिंक के अलग अलग सेट कर सकते हो सीएसएस
Example of styles hyperlink. This is an example of style hyperlink. Same for all HTML. ये डॉक्यूमेंट टाइप HTML लिखा नहीं लिखा तो भी चलेगा, इट्स ऑप्शनल. HTML लैंग्वेज अगेन इट्स आल्सो ऑप्शनल. डायरेक्टली आपने HTML लिखा तो भी चलेगा. फिर हेड, फिर मेटा कैर वगैरह नहीं लिखा तो भी चलता है. डायरेक्टली टाइटल लिखा तो भी चलेगा. टाइटल स्टाइल शीट, स्टाइल स्टार्टिंग फॉर स्टाइल शीट with style tag. Body is a selector, element selectors. Okay. Font dash family, ये प्रॉपर्टी है. इसका फैमिली है एरियल sans serif. Font for the page. A anchor, color colon blue, text decoration none, transitions color 0.3, smooth transition for color change. तो इस तरह के प्रॉपर्टी आप सेट कर सकते हैं और डेकोरेटिव कर सकते हैं. ए हावर्स, कलर ऑरेंज, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन. ए कोलन विजिटेड, कलर पर्पल. ए कोलन एक्टिव, कलर रेड. स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज. वेलकम टू माय वेबसाइट, check out these links. UL underlining link. Okay, Sanjay will be say कि HTML कौन से, एक सेकेंड, HTML कोड कोणत्या ॲपवर रन होईल. ओके, ॲप तो आपको डायरेक्टली गूगल पे सर्च मारो या ऑनलाइन HTML कंपाइल लिखा तो भी आपको मिल जाएगा. स्पेसिफिक ॲप आहे का कोणते, भरपूर ॲप आहे पण आम्ही जास्त यूज केलं नाही. वी हैव टू यूज डायरेक्टली ऑन पीसी. पीसी पे ही ज़्यादा यूज किया जाता है. तो ऐप की लिस्ट चाहिए तो आपको गूगल में मिल जाएगा. जस्ट टाइप द HTML कोड ऐप, वेब ऐप, मोबाइल ऐप करके लिखो. आपको वहाँ पे मोबाइल में गूगल में मिल जाएगा ऐप का नाम, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो. लेकिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, मैंने तो यूज़ किया नहीं ज़्यादा क्योंकि हम लैपटॉप और पीसी पे ही करते हैं. वहीं पे हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सकता है. ओके. एक्टिव कलर रेड, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज. जो भी आपने हाइपरलिंक दिए, href http example.com विजिट एग्जाम्पल, ovenia.com विजिट ओपन एआई, ओपन एआई करके. ठीक है. तो हाइपरलिंक सेट किया है. तो इनके अलग अलग कलर चेंज होंगे जब आप इसको एक्टिव करोगे, विजिट करोगे, क्लिक करोगे. तो it will be affect colors with the help of style sheet. तो ये स्टाइल के कलर चेंज होते जाएंगे. डिफॉल्ट स्टेट लिंक्स आर स्टाइल विद ब्लू कलर एंड नो अंडरलाइन. डिफॉल्ट मतलब जब आप ब्राउजर में देखोगे तो आपको ब्लू कलर दिखाई देगा लेकिन अंडरलाइन नहीं दिखाएगा. हावर स्टेट में क्या होता है, व्हेन यूजर आवर्स ओवर अ लिंक, जब आप माउस जो है लिंक के ऊपर लेके जाओगे तब उसका कलर चेंज हो जाएगा ऑरेंज. एंड इट्स गेट अंडरलाइन, उसको अंडरलाइन दिया जाएगा. विजिटेड मतलब आप जब लिंक दैट हैव बीन क्लिक चेंज टू द पर्पल कलर, विजिटेड बोलते हैं. स्टेट, एक्टिव स्टेट, ये सब लिंक के स्टेट है. डिफॉल्ट स्टेट, हावर स्टेट, विजिटेड स्टेट, एक्टिव स्टेट. व्हेन अ लिंक इज बीइंग क्लिक टू इट्स कलर चेंज टू रेड. तो ये सारे के सारे क्या है, उसके स्टेट से हाइपर लिंक है. आप
उसके कलर चेंज कर पाते हो और ये डेकोरेटिव कर सकते हो, तो ये दैट इज द बेनिफिट फॉर क्रिएटिंग वेल फॉर्मेटिंग योर पेज। ओके, क्रिएटिंग एंड लिंकिंग एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स, ये वो आपका सीएसएस का पहला पार्ट। आपने इंटरनली एक स्टाइल शीट बनाया, तो जनरली सीएसएस के तीन टाइप्स आते हैं। इंटरनल सीएसएस, पहला आता है इनलाइन सीएसएस, फिर एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। Using the external style sheet is the best practice in a web development. अभी हमने इंटरनल देखा, एक्सटर्नल कैसे होता है देखते हैं। As it helps maintain the separation between the content and presentation. इसमें HTML सेपरेट होता है और CSS भी सेपरेट होता है। CSS मतलब प्रेजेंटेशन रहता है, फॉर्मेटिंग रहता है, और HTML मतलब कंटेंट रहता है। This allows for the easier maintenance and consistency across multiple pages. इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें कंसिस्टेंसी रहता है, मेंटेन करने के लिए इजी है, अपडेट करने के लिए भी इजी है, और एक सेंट्रलाइज बन जाता है वो इस टीम के लिए। Here how to create and link external style sheet in HTML file। तो एक्सटर्नल सीएसएस में कैसे क्रिएट किया जाता है? क्रिएट एन एक्सटर्नल सीएसएस फाइल, तो इसका एक सेपरेट सीएसएस फाइल बनाना है, सेपरेट एचटीएमएल बनाना है। दोनों भी आपको एचटीएमएल में ही बनाना है, दोनों के नाम अलग रह गए, एक्सटेंशन अलग रह गए। सीएसएस का एक्सटेंशन डॉट सीएसएस और एचटीएमएल का डॉट एचटीएमएल। फर्स्ट, create a new CSS file. Open your code editor and create a new file. Save it as a style.css. Add CSS rule. पहला बॉडी सिलेक्टर लिया, तो इसका स्टाइल का नाम दिया हमने style.css। बॉडी टैग, बॉडी फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग। H1 लिया, कलर नेवी, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर। पैराग्राफ P कलर #3, लाइन डैश height 1.6। Steps 2, एक सेकेंड। H1 paragraph. Step 2, link the CSS file to your HTML documents. Open HTML file. Open HTML file. Open the HTML file where you want to apply the styles. For example, index.html. Add a link tag in the head section. Use the link element to the links your external CSS file. This should be the head tag. तो कुछ नहीं, आपको हेड टैग के अंदर एक लिंक नाम का टैग लिखना है। जैसे कि अभी ये हेड है आपका, इसके अंदर ये आपको लिंक लिखना है। लिंक टैग है, REL रिलेशन स्टाइल शीट है। href क्या आएगा? जो आपने CSS बनाया है, style.css। इतना आपको यहाँ पे मेंशन करना है हेड के अंदर। ये HTML का index.html फाइल अलग है। ओके, इससे क्या था? लिंक टू द एक्सटर्नल CSS फाइल।
अभी इसके अंदर बॉडी के अंदर H1 है, पैराग्राफ है, तो H1 में क्या होगा इफेक्ट जो आपने इसमें दिया है, कलर नेवी हो जाएगा और टेक्स्ट अलाइनमेंट सेक्टर। पैराग्राफ को क्या होगा, कलर ये आएगा, लाइन हाइट 1.6 आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, खाली लिंक टैग आपको पता होना चाहिए। सो इन दी एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव लिंक टैग, REL स्टाइल शीट ये एक रिलेशन है, specify the relationship between the current document and the link resources, indicating that resources is a style sheet. href is equal to style.css. href मतलब क्या, hypertext reference, जो हम एंकर टैग में भी यूज करते हो और यहाँ पे भी यूज करते हैं। ओके, उसके बाद href स्टाइल शीट हो गया, तो ये CSS फाइल वहाँ पे हमने सेट की है। स्टेप 3, टेस्टिंग द स्टाइल्स। ओपन एचटीएमएल पेज जो अभी हमने लिखा है आपको वैसे ही आपको करना है, एंड मेक द चेंजेस इन द ब्राउजर। तो ये एक्सटर्नल शीट कैसे लिंक किया जाता है, ये एग्जांपल है। एचटीएमएल का पहले index.html फाइल बनाया, सीएसएस का दूसरा फाइल बनाया style.css। एचटीएमएल में आपने जो हेडिंग लिया है, पैराग्राफ दिया है, उसकी फॉर्मेटिंग हमने सीएसएस में लिखी है style.css। तो वो अप्लाई करने के लिए आपको लिंक टैग का यूज करना है। लिंक में आपको सेट करना है रिलेशंस शिप्स, ये वाला लिंक, लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट्स, href इज इक्वल टू styles डॉट css। ये आपको वहाँ पे सेट करना है। ओके, उसके बाद फिर आप ब्राउजर में उसका इफेक्ट देखते हो कि किस तरह से इसका इफेक्ट आता है और किस तरह से आप उसकी जो फॉर्मेटिंग है वो वहाँ पे चेकआउट करते हैं, राइट। सो दिस इज फॉर योर दिस एक्सटर्नल CSS। पहला हमने देखा इंटरनल, दूसरा था एक्सटर्नल। फॉर्मेटिंग द पैराग्राफ बाय यूजिंग द स्टाइल शीट। अगर आपको पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग करना है, पैराग्राफ हम लिखते हैं, फिर उसमें उसके इंडेंटेशन के बारे में आता है, उसके अलग अलग सेटिंग्स आप करते हो, लेफ्ट राइट वगैरह अलाइनमेंट देते हो। Formatting paragraph will be CSS allow you to enhance the appearance and readability of your text। तो पैराग्राफ जो है रीडेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, इसके कंटेंट भी अच्छे होने चाहिए। Formatting the graph paragraph with CSS allow you to enhance the appearance and style readability of your text content। You can adjust the properties such as font size, color, line, height, and margin, and more। इंडेंटिंग पैराग्राफ्स, पैराग्राफ को हम इंडेंट करते हैं। Indenting paragraph can improve the readability and enhance the visual structure of text। We can achieve this using CSS properties।
Below are the steps and example to help the indent paragraph effectively. Create or use an existing CSS file. Create a CSS file, for example, style.css. If you already have one, we can simply add the indenting style to it. Style.css. Body. Font family, background color, margin, padding, paragraph, color, font size, align height, margin bottom, text indent. Link the CSS file to HTML document. index.html लिखा यहाँ पे, वापस आपको ये दिखा यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक है, तो आपको यहाँ पे मेंशन करना है style.css. आपको जो नाम चाहिए वो नाम आप वहाँ पे दे सकते हो. ओके, फिर इसमें जो भी आपने लिखा होगा वो सारा इफेक्ट इस इंडेक्स इसके अंदर दिखाई देगा. So this is for the indentations you have to set for there. तो इसमें साइज, फॉन्ट साइज, हाइट, लाइन हाइट, मार्जिन बॉटम, ये सब कुछ टेक्स्ट इंडेंट भी सेट किया गया है. उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यूज है ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं. तो उसकी लिस्ट भी रहती है और लिस्ट में आपको पता चलता है कि कौन से प्रॉपर्टी और वैल्यूज है. टेक्स्ट इंडेंट, this property is a key for indenting the first line of paragraph. Indenting के लिए यूज होता है ये. In the example, 20px means the first line of each paragraph will be indented by 20 pixels. Testing the indentations. Open your index.html. Observe in the first line paragraph. You have to applying for this. Applying a border to paragraph. अगर border को paragraph देना है. Adding the border to paragraphs can help visually separate them from others. Content, making your web page more organized and synthetically placing. You can achieve this using CSS. Here, how to apply a border to a paragraph in HTML file. Create or use an existing CSS file. तो इसको कैसे सेट किया जाता है, इसमें भी style.css, body, font family, background color, margin, padding. पैराग्राफ देखो, font size, line height, margin border, padding, border radius, background color, ये सब कुछ सेट किया गया है. ये HTML फाइल है. So this is a paragraph heading are there. So we have to see the effect. तो ये एक्चुअली आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जब आप इसको ब्राउजर में देखोगे तब आपको इसका इफेक्ट शो हो जाएगा. अदरवाइज इट इज नॉट अ अंडरस्टैंडिंग विथ कोडिंग. कोडिंग अगर आपको शो करना है तो ब्राउजर में उसका इफेक्ट देखो, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से सेट किए गए हैं अलग अलग सेटिंग्स. ओके,
specifying the horizontal alignment of paragraph. Horizontal alignment of text in a paragraph is essential for achieving a desired layout and improving readability. Can control the alignment of paragraph using a text align property in CSS. Step 1, create or use existing CSS file style.css. Body, font family, background, margin, padding. H1, paragraph, different alignment for paragraphs. Dot left, text align left. Center, dot center, dot justify, ये सब अलाइनमेंट है टेक्स्ट की, राइट? तो वापस लिंक टैग का यूज करके उसको यहाँ पे लिंक किया है एक्सटर्नल सीएसएस को. दिस इज योर पेज. पी क्लास लेफ्ट, पी क्लास सेंटर, हर पैराग्राफ को क्लास सेंटर जस्टिफाई तो ऊपर मेंशन किया है. सेंटर डॉट सेंटर, ये क्लास है टेक्स्ट अलाइन सेंटर. डॉट राइट डॉट जस्टिफाई, तो वहां पे खाली उसको क्या किया है, उस क्लास को अप्लाई किया है. सो योर प्रैक्टिस इज मस्ट. इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तभी आप अच्छी तरह से इसको अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे. Otherwise, it is a very difficult to understanding how it can be work, how to write a paragraphs, how to write a various formatting CSS. Okay. ठीक है, तो अभी ये जो इसका सेशन है, यहाँ पे अभी मैं स्टॉप करता हूँ आज का सेशन. ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे आगे का पॉइंट्स जो है. अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करता हूँ. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन बी आस्क. कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो फिर लेफ्ट किया तो भी चलेगा. Sorry. Yes, any doubts? No? तो ठीक है फिर चलेगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्प्लेइंग द ग्राफिक्स, सिलेक्टिंग ग्राफ फॉर्मेट. सॉरी, अभी यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं.